Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the lumbar vertebra, the typical and atypical one. We know that there are 5 lumbar vertebra. Out of these, 4 are typical ones. The first 4 are typical lumbar vertebra, while the fifth lumbar vertebra is called as atypical. Why? We'll have a look at that as well. So we know that the typical features of a typical lumbar vertebra is such that you are having a body, right, which is called saddle-shaped, or you can say bean-shaped or kidney-shaped, right. The vertebral foramen is quite triangular, right. Then we're having a short pedicles, which are short and strong, as you can see. Then there's a spine that is quadrilateral, जो कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही is it quadrilateral or not, but in this image we can clearly comprehend that the spine is quite quadrilateral in shape, right. So that's one of its features. अच्छा, इसके अलावा there are transverse processes moving backwards and laterally, as you can see, and then there's a lamina, which are quite broad and short, and they are you can say joining each other posteriorly at the spine level of the spine, right. Okay, then there are superior articular processes having the superior articular facets medially, जो कि join करते हैं with the inferior articular processes of the spine or the vertebra above, right. Okay, so spines process हो गए, superior articular processes हो गए. अच्छा, at the root of each transverse process, you can see there is a bulging or a protuberance called as the accessory process, right. So हमें ये बताना चाहिए that there is an accessory process on the lumbar vertebra. इसके अलावा on the you can say tip of the superior articular process, there is again a bulging or a protuberance called as a mammillary process. So accessory process होता है at the root of the transverse process, and mammillary process होता है at the tip of the superior articular process. So बस यही है उसकी inferior articular processes, superior articular processes, the mammillary process and the accessory process, right. Okay, then again the quadrilateral spine and the body and everything else. So this is how it looks like when the inferior articular processes you can say join or unite with the superior articular processes of the spine below. Okay, then we have the fifth lumbar vertebra, which is called as atypical lumbar vertebra. और उसकी atypical चीज़ ये होती है that the spine is quite rounded and short and small, while in the previous case the spine was quite quadrilateral and broad and longer, right. And in addition to that, we can see that the transverse process is quite short. In the previous case, the transverse process was longer, and you can say they were moving laterally, and while in this case there is a pyramidal shaped transverse process, right. And in addition to that, एक और चीज़ होती है that we say that कि जितने भी हमारे पास superior और inferior articular processes होते हैं, they lie, जो superior articular processes होते हैं ना of the first 4 lumbar vertebra, they are lying farther apart as compared to the inferior articular processes, right. जो inferior articular processes होंगे थोड़े पास होंगे, while the superior articular processes will be farther apart. While in case of the fifth lumbar vertebra ऐसा नहीं होता. इस केस में superior और inferior articular processes एक ही distance पे होते हैं, like जिस distance पे superior वाले होंगे उसी distance पे inferior वाले भी होंगे, right. So ये 3 peculiarities होती हैं फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, जिसको हम उसको एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा कहते हैं. नंबर 1 is the spine, which is short and you can say blunt, right, and the transverse processes are pyramidal shaped, and the superior articular facets are having same distance as that of the inferior articular facets or inferior articular processes, right. अच्छा, फिर कुछ conditions होती हैं जो associated होती हैं with the lumbar vertebra. Number 1 is the hemivertebra, in which हमें पता है कि जो vertebra की body होती है that is formed by 2 ossification centers, 2 primary ossification centers, right. So if one of the ossification center fails to form or fail to ossify, that condition results in half of the vertebral body to be formed and half is not formed. That's called the hemivertebra, right. Okay, so ये condition होगी. Then we have a condition called as the spina bifida, in which the neural arteries during developmental period they fail to fuse, so that the vertebral body or the vertebral column as a whole, it has a crack in it, right, and through that crack the spinal cord and the meninges get protruded outwards, right. And as you can see that if only the meninges get protruded out, that condition is called as meningocele, right. And if the spinal cord as well as the meninges get protruded outwards, that is called a meningomyelocele. And if only spinal cord gets protruded out, God forbid, that condition is called as the simply myelocele. Okay, right. अब कहा जाता है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड इस वजह से प्रोट्रूड आउट करेगी, तब उसका जो सेंट्रल कनाल होगा वो थोड़ा सा यू कैन से डायलेट कर जाएगा, एंड दैट डायलेशन ऑफ द स्पाइनल कनाल एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोट्यूबरेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दिस क्रैक इज कॉल्ड सरिंगोमाइलोसील. ठीक है, तो सरिंगोमाइलोसील की कंडीशन तब होती है जब भी स्पाइनल कॉर्ड का कनाल जो है वो बड़ा हो जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन. ओके, देन वी हैव सिंड्रोम कॉल्ड एज द कॉडा इक्विना. अच्छा, एक और चीज़ अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कोई भी क्रैक है, कोई भी उसमें स्पाइना बाइफिडा कंडीशन है, बट नो प्रोट्यूबरेंस इज देयर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. कि कोई क्रैक तो है, एब्नॉर्मलिटी तो है, हमें एक्सरे में नजर आ रही है, बट देयर इज नो प्रोट्यूबरेंस ऑफ एनी सॉफ्ट स्ट्रक्चर. कोई स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से प्रोट्रूड आउट नहीं करी, कोई वहाँ से मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट नहीं करे, दैट कंडीशन कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. ओके, दिस कंडीशन कॉल्ड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, एंड दिस कंडीशन इज सच दैट कि जो हमारे पास फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा होती है वो स्लिप फॉरवर्ड कर जाती है ओवर द सैक्रल वर्टिब्रा.
एंड दैट कंडीशन, अच्छा इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी फैक्टर होता है, दैट इज जो हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है ना फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा का, वो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के पीछे पड़ा होता है, सो दैट जो उसका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है ना फर्स्ट सैक्रल का, वो उसको यू कैन से ऐसा ब्रेक लगाई होती है उसने इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के आगे, ठीक है. बट if this inferior articular process of the fifth lumbar vertebra gets broken down or it is not formed due to any developmental anomaly, as a result of that the fifth lumbar vertebra will be slipping forward over the first sacral vertebra, तो ये आगे स्लिप कर जाते हैं. दैट कंडीशन को स्पॉन्डालोलिस्थेसिस. और इस केस में अब वो हमारे जो नर्व होते हैं, सियाटिक नर्व, उसके अलावा काफ़ी पेन भी होता है, इट इज कॉल्ड सियाटिका. Okay. Next is cauda equina syndrome. We know that till the level of L2 आगे spinal cord तो प्रोसीड नहीं करती, बट जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो नीचे ऐसे मूव करते हैं, गुच्छा बना देते हैं. गुच्छा was called as cauda equina, and if at the level of cauda equina any of the lumbar vertebra gets damaged, L3 से L5 तक कोई भी डैमेज होती है in case, so that will result in cauda equina syndrome. और उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं that they will be flaccid paraplegia, like lower limb का पैरालिसिस होगा लेकिन फ्लैसिड होगा. सेकेंडली एक स्पाइनल सैडल शेप एरिया होगा, एनेस्थीसिया का ऑन द लोअर लिम्ब रीजन, एनेस्थीसिया होगा और एनाल्जेसिया होगा. एनाल्जेसिया इज टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, वो भी वहाँ पे नजर आएगी हमें. स्फिंक्टर्स विल बी डिस्टर्ब्ड सच दैट देयर विल बी नो कॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और फीसिस, दैट विल बी नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, एंड देयर विल बी इम्पोर्टेंस, राइट. Then the condition that if the normal convexity थोड़ी सी होती है ना lumbar vertebrae, but if that convexity gets exaggerated, that condition is called a lordosis of lumbar vertebra, and that is quite definitely abnormal. Okay, so before that, one more thing, that if there is you can say a lateral bulging in the spine, that is called as scoliosis, right? And if there is a anteroposterior bulging, like अगर ऐसे बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे anteroposterior से bulging हो lumbar के अलावा किसी और region में, that is called kyphosis. So anteroposterior bulging or convexity, kyphosis. Sideways convexity, scoliosis. And this way lumbar region में अगर convexity आगे forward होनी चाहिए, वो होगी lordosis. So that's all I needed to tell you about the lumbar vertebra. I hope it was helpful for you. Thank you so much. Allah Hafiz.